Hello champions, in this video series we are going to learn the different sound of vowel A. This is our first part and today we will learn the short A sound. But before that, let's check how many different sounds the vowel A make. Look here. The vowel A can make 5 different sounds. और ये है हमारे short A sound, long A sound, R controlled A sound, a sound like short O as in ball, schwa sound जो एक weak sound है. So let's start our lesson with the short A sound. First, you should know the correct pronunciation of the short A sound. When you say the short A, our jaw goes slightly down and mouth opens a little. Now, repeat after me. The short sound of A is A. A. Good. Same as in a apple, a ant, a airplane. Before switching to our main topic, पहले हम short a sound and long a sound का difference देख लेते हैं, so that कोई confusion ना हो. In short A sound, the vowel A will say its sound, which is A, as in apple. जैसे हमारे letters के sound होते हैं, same वही हमारे short sound होते हैं. But in long A sound, the vowel A says its name, which is A, not A. Listen carefully. It will say its name, that is A, as in cake. A. Because of the sound difference, word का meaning भी change हो जाता है. For example, TAP, tap, TAPE, tape. टैप में हमारा शॉर्ट ए साउंड यूज हो रहा है और टेप में हमारा लॉन्ग ए साउंड यूज हो रहा है. लॉन्ग ए साउंड हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो. नाउ द बिग क्वेश्चन इज, व्हेन डू वी यूज शॉर्ट ए वॉवल साउंड? शॉर्ट ए साउंड यूजुअली हमारा CVC words, consonant blends, closed syllable और कुछ sight words में यूज होता है. All these concepts are interconnected. इनके meaning just थोड़े थोड़े ही change होंगे. So let's start with our first concept, that is CVC word family. सबसे पहले आपको CVC का पता होना चाहिए. देखिए CVC शॉर्ट फॉर्म है हमारी कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट की. ठीक है, इसमें हमारा वावल क्लोज्ड होता है हमारे कॉन्सोनेंट के बीच में. सेम कॉन्सेप्ट हमारा क्लोज सिलेबल में भी होता है, इन विच जो हमारा वावल होता है दैट इज ट्रैप्ड बिटवीन टू कॉन्सोनेंट्स, इसलिए हमें शॉर्ट ए साउंड सुनाई देता है. तो चलिए अब वर्ड फैमिली को डीपली पढ़ते हैं. फर्स्ट इज एब वर्ड फैमिली एंड द साउंड इज एब. एब, रिपीट करिए, एब. इसमें हमारा जो एंडिंग साउंड है वो हमारा सेम रहेगा. यहाँ पे हम जस्ट फर्स्ट लेटर को चेंज करेंगे एंड बाय यूजिंग this we can make many new words. For example, ab, cab,
Let's see some more words that also end with ab. Lab, tab, gab, jab. Let's move to the next word family, that is add family. Last sound remain the same as add. Add. Let's take example. D add. Dad. S add. Sad. B add. Bad. L add. Lad. P add. Pad. M add. Mad. Now we have ag word family with ending sound ag. Say ag. For example, ag, bag. Ag, tag. Ag, rag. Ag, gag. Ag, sag. Ag, hag. Ag, wag. Ag, nag. Now let's move to our next word family, that is arm word family. Ending sound arm. चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं. Am, jam. Now it's your turn. Try to read these words. Once you're done, I will show you how to read. I hope आप सबने ट्राई किया होगा. Now I will show you how to blend these words one by one. The first word is RAM. Read the first consonant, that is and then read the rest, that is am. Now blend them together. Am, ram. Am, cam. Am, tam. Am, yam. Am, ham. Am, dam. Move to our next word family, that is an. Ending sound an. For example, an, pan. Let's check the word list. MAN कैसे रीड करेंगे? First consonant, then ending sound an. An, man. An, tan. An, fan. An, van. An, ran. An, can. This is our next word family, that is app. Ending sound app. Example, app, tab. CAP, app, cap. NAP, app, nap. RAP, app, wrap. App, gap. App, map. App, lap. This is our last word family, at. Ending sound at. Example लेके समझते हैं. At, bat. More words are CAT, at, cat. At, mad. At, bad. At,
rat, at, hat, at, fat। और शॉर्ट ए साउंड हमारा क्लोज सिलेबल में भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल BAT। BAT हमारा एक क्लोज सिलेबल है in which vowel A is closed, trapped between two consonant। Because of that जो हमारा vowel sound होगा वो short होगा। For example a प, यहाँ पे a sound हमारा short हो जाएगा map। Same as न fan। यहाँ पे हमारे टू क्लोज सिलेबल हैं। फर्स्ट इज a प नैप, और सेकंड है हमारा किन नैपकिन। आई सेम एज ए, इसमें भी शॉर्ट आई का साउंड आएगा। अनदर वर्ड लैपटॉप, लैपटॉप। क्लोज सिलेबल हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हमें वर्ड्स को सिलेबल में डिवाइड करना आ गया तो प्रोनाउंसिएशन इजी हो जाती है। जैसे हमें पता चल गया क्लोज सिलेबल है तो हमारा साउंड शॉर्ट होगा, और वैसे ही हमारे ओपन सिलेबल होते हैं। इन ओपन सिलेबल द वावल सेज इट्स नेम नॉट साउंड। तो यही डिफरेंस से हमें पता चलता है कब हमारा शॉर्ट ए प्रोनाउंस होगा और कब हमारा नेम ऑफ द लेटर, नेम ऑफ द वावल प्रोनाउंस होगा। नाउ दिस इज अवर सेकंड लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स को हम एक इजी एग्जांपल से समझते हैं। मेरे को स्मूदी बनानी है तो मैं अपने फेवरेट फ्रूट्स यूज़ करूँगी, मैंगो एंड ब्लूबेरी। तो मैं क्या करूँगी, मैंगो ब्लूबेरी को अपने मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करूँगी और उनको ब्लेंड कर दूँगी। आफ्टर ब्लेंडिंग क्या होगा, स्मूदी तैयार हो जाएगी। और स्मूदी में क्या होगा, दोनों का टेस्ट होगा, मैंगो का टेस्ट भी होगा और ब्लूबेरी का टेस्ट भी होगा। हम सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स में भी। कॉन्सोनेंट ब्लेंड में भी जब भी हमारे 2 और 3 कॉन्सोनेंट साथ में आएंगे, वी कैन हेयर ईच साउंड, उन दोनों के साउंड हमें सुनाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल BL हमारी 2 कॉन्सोनेंट हैं, पर उनको ब्लेंड करेंगे तो साउंड आएगा प्ल, एज इन ब्लैक। नाउ चेक द कॉन्सोनेंट ब्लेंड वर्कशीट। The word black start with the consonant blend BL, and we can hear both sound B and L. Then we have vowel A with short sound A. At the end, CK closes the syllable. तो short A sound हमारा CVC वर्ड और कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स दोनों में यूज होता है। चलिए वन बाय वन सारे वर्ड्स को चेक कर लेते हैं। FLASH फ्लैश, CLAP clap clap, glad glad, snap snap, stand stand, track track, grab grab। दिस इज योर होमवर्क, आप अपने आप ट्राई कीजिए। नाउ लास्ट टॉपिक इज साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स क्या होते हैं? साइट वर्ड्स आर वर्ड्स दैट वी हैव टू रिमेंबर एज दे आर। हमें इनको एज इट इज लर्न करना पड़ता है, बिकॉज usually they do not remember by their sound.
Here are some examples of sight words that use short A sound. An, as, am, had, has, at, can, that, then, and last is and. That's all for today. I hope आपको short A sound अच्छे से समझ आ गया होगा. See you in the next part, that is long A sound.